Okay. Good morning everyone. My name is Dipanjan Deb and I welcome you all to the Ojank IAS, and here I am with a demo class on economics based upon the prelims perspective. So let us start. So the topic is okay. So the topic of discussion is inflation and monetary policy. So let us have a brief idea about what is this. This is basically a prelims perspective class, so I expect that yes, students have completed the syllabus at least once, and it is a revision based class. So I don't need to explain what is economy and what is its importance and all these things starting from the basic things. I'd like to highlight few points which are necessary for prelims perspective. So the topic is inflation and monetary policy. So let us see what is this. Let us have some brief idea about inflation. So we all know that inflation means continuous rise in general prices of commodities. When the price is rising continuously, okay, suppose this is called as general commodities, not one commodity only. When the price of all the commodities in the market, available in the market, goods or services, are increasing constantly, then we can say that inflation is there in the market. Okay, suppose rupees 100 was the price of general price, average price of commodities present in the market. Okay, so if it is 101, can we call it as inflation? If it becomes 102, can we call it as inflation? Is there any parameter that yes, we should judge that yes, it will be called as inflation or no? If it is 105, 110, which one will be called as inflation? Basically, price hike more than 2%, is considered as inflation, but less than 2%, suppose these two, will be considered as general price hike. Okay, inflation, as it everybody knows that yes, it has become a matter of general discussion. Every day we see in news or media or everywhere that yes, inflation is there. Inflation means general price hike, but if it is increasing at a rate of more than 2% per annum. I hope it is clear. Then it is based upon the principle of ceteris paribus. What does this mean? Ceteris paribus. Ceteris paribus means, let us suppose, the principle of ceteris paribus says that let us suppose everything else is constant. Let us suppose there is no population growth, let us suppose there is no corona, no tsunami, nothing has come, everything is same as compared to the previous year. Let us suppose. At first we calculate inflation based upon ceteris paribus, that yes, let us suppose everything else is constant, then we will correlate the inflationary rate with the other situations like corona has come or population growth has happened or there was a something else, cyclone has come, whatever it is. So let us suppose everything else is constant. What happens in inflation? Now, if the price of goods are increasing and people are purchasing it, this means that people are having money. The market is having enough money to purchase the goods and commodities, goods and services at a higher rate, higher price, right? Suppose the price of something was 100 rupees earlier, now it has become 110 rupees. Market is having enough money to afford this one also, that's why people are purchasing. Means money circulation in the economy increases. Money circulation in the economy increases in case of inflation. This means money is too much and goods are less, goods or services are less in comparison. So too much money chasing too little goods or services. Goods or services are less as compared to the money circulation. People are having more money, as we see in the Karol Bagh or Rajendra Nagar area, right?
the price of a commodity which costs nearly, suppose 10 rupees outside, it will cost here 15 to 20 rupees. Because money circulation is more as compared to the goods and services present in the market. Suppose the rent of PG also, if you see in the local area, I can give the example. If you see in the Karol Bagh area, the rent of PG is too high as compared to other areas, because money circulation is there, but goods and services PGs are less as compared to the persons who need the PGs. And in case of inflation, always there is a depreciation of currency. Depreciation means value of currency, value of rupees. Suppose inflation is there in Indian market, so Indian currency will depreciate. Depreciation means the value of Indian currency will be less as compared to, suppose earlier $1 equal to it was 70 rupees. Okay. Now if inflation is there, $1 will be equal to suppose 80 rupees. So with respect to $1, we can say that the value of rupee has depreciated, reduced, because earlier whatever, suppose earlier with 70 rupees we were able to purchase $1, but now with 70 rupees we are not able to purchase, we need more money. So this is what happens in case of inflation, depreciation of money, depreciation of currency. I hope it is clear, and prelims perspective, so I don't need to explain too much. Okay. So let us discuss the types of inflation. First one is based upon causes. Based upon causes, what are the causes of inflation? Based upon the causes of inflation, what are the types? First one is demand pull inflation. As just now I have said that, yes, I have given the example of PG. So PG in Karol Bagh area, huge demand is there. People are demanding, more number of people are there who are asking for PGs, but PGs are less. PGs are less as compared to the demand, or whatever, whether it is food items or educational items, anything nearby this area, people are there to demand. Now suppose one product was being sold at 100 rupees. If so many people are asking for it, the seller may raise the price up to 110 or 120 even. That yes, if you don't want to take, okay, no problem, there are other people also who will take it. Who will take it? So as per demand, as demand is there, price will increase. That is called as demand pull inflation. Now suppose if the Delhi government makes wearing of helmet compulsory, that yes, without wearing helmet no one can move in on the road, then you will see that the rate or price of helmet will increase. Demand increases, so price increases. That is a basic thing. Yes. So this is called as demand pull inflation. Demand is pulling the price along with it. Demand is going along with it, it is pulling the price. Next one is cost push inflation. Cost push means if the cost of manufacturing increases, suppose the cost of manufacturing of this pen was 50 rupees. Okay, it was sold at 70 rupees. Now if the cost of production depends upon the factors of production. What are the factors of production? There are 4 factors of production. Number 1 is land, labor, capital and entrepreneur. So if suppose this building is there, land is there, if the building owner asks for more rent, means, or if the landowner asks for more rent, so the rent will be increased, means the rent required to give for the land or building will be increased. If the labor means workers, whether skilled or unskilled, okay, if they start demanding more salaries or wages, then also the product of manufacturing,
cost of production will increase. If the capital, suppose there are 5 investors in the institute, okay, if they start demanding more profit or if they start demanding more shares, then also the cost of production will increase. Sorry, capital means interest. If the investors or if the bank from where suppose investment has been taken, loan has been taken, if they ask for more interest, then also cost of production will increase. Entrepreneur means the businessman, the owners. If the owners, suppose there are 5 partners, okay, if they start demanding more shares or more profit, then also the cost of production will increase. So if the cost of production is increased, suppose earlier if this pen was made at 50 rupees, now if the cost of production increases and if it is made at 70 rupees, can the person sell this pen at 70 rupees? The answer will be no. The person has to increase its price to at least 90 or maybe 100 rupees. Clear? So this is cost push inflation. Cost is the manufacturing cost or the cost of production is pushing the price. Then demand pull cost push inflation. This is a combination of both of these, where demand is also there and cost of production has also increased. So this is a scenario where it is called as demand pull cost push inflation. Next one is an interesting one, wage push inflation. Now what is wage push inflation? What is wage push inflation? Suppose a person was getting a salary of 10,000 rupees per month. Now inflation is there in the market, okay, so he asked the company that yes, I am not able to sustain, I am not able to manage my accommodations and all these things, expenses with this salary, please increase my salary. So the company increased the salary from 10,000 to, let us suppose, 12,000 rupees, okay, so that the person can manage the salary, manage the expenses based upon the inflation, because inflation is there in the market, products have become costlier, so the salary should also be hiked. Now when the salary has increased, the person, what will the person do? The person will demand the things, demand for various items. Suppose earlier, yes, he might be looking for taking a phone, but he was waiting that he was having less money. Now he has, yes, his salary has increased, or he was planning for a outstation trip, but he was not able to because he was having less money. Now he is having money in his hand, so the person will demand for various goods and services, okay, various goods and services the person will demand. When the person will demand means if the person purchases something, so more money, again money will be circulated in the market, so money circulation, will increase, and when money circulation is increased, suppose inflation is there, okay, for which the salary has been increased, for increased salary there will be demand and indirectly ultimately there will be more money circulation in the market, which will again cause inflation. This is wage push, means at first for inflation was high, so wage or salary was increased, okay. Now when wage or salary has been increased, there will be more money circulation in the market, okay, there will be more money circulation. More money circulation means again this will cause inflation. So this is a cycle. This type of inflation is called as wage push inflation. Because of inflation, the wage or salary or this income has been raised, and because of higher income
there will be more money circulation in the market, which will indirectly cause inflation again. I hope it is clear. Next one is inflation due to deficit financing. Deficit financing means, suppose we are having a deficit. Deficit means when the expenditure is more than the income. Suppose your salary is 10,000 rupees and expenditure is 12,000 rupees. So that is called as deficit. Deficit. Now, if deficit is there in the market, what will the government do? Yes, government's expenditure is more than the income. So government will take some steps, like it will borrow loan from IMF or some other country. It can go for public borrowing. It can go for currency printing also. So if this happens, means for mitigating this deficit, the steps taken by the government are called as deficit financing. Deficit financing. Now, in case of deficit financing, what happens? Government is taking money from outside and pushing into the market. I hope it is clear. Means deficit is there. Deficit means government's expenditure is more than the income. So when deficit is there, government will take some steps, like it will take loan from banks, it will take loan from RBI, it may take this thing, loan from IMF or World Bank or some other country. It can take it can sell its bonds, it can take money or borrow from public. So whatever it is, means if deficit is there, government will take some steps to mitigate it, means that is called as deficit financing. If deficit financing is there, means government is pushing more money into the market. Government is pushing more money into the market, so that will again increase the inflation. That will again cause inflation. And next one is inflation due to more currency printing. Yes, if government, many of us say that yes, what will happen? Sir, please be seated. So English is okay or bilingual? Okay. So इन्फ्लेशन ड्यू टू मोर करेंसी प्रिंटिंग. अब हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट आरबीआई को क्यों नहीं बोलती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छाप दो. ज़्यादा पैसे छापने से गरीबी दूर नहीं होगी, उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा. सपोज स्कूल में मार्क्स हम लोगों को मिलते थे, जिसको जितने मार्क्स मिले, अगर ये बोला जाए कि सबको 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा, तब भी तो डिफरेंस उतना ही रहेगा, राइट. एक को 60 मिला था, एक को 70 मिला था, अगर +10 कर दिया जाए तब भी तो दोनों के सेम रहेंगे ना डिफरेंस. इसका 70 हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा, बट डिफरेंस तो सेम रहेगा ना. इधर 10 डिफरेंस है, इधर भी 10 डिफरेंस है. सो सेम थिंग, अगर ज्यादा करेंसी प्रिंट करके अगर मार्केट में छोड़ दिया या लोगों को दे दिया, देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज इन्फ्लेशन. इट विल कॉज इन्फ्लेशन. I hope it is clear. Types of inflation based upon causes. Next one is types of inflation based upon growth rates. So creeping inflation, when the growth rate is very less, let us say suppose 2 to 3%. Mild inflation, it is also called as mild inflation. Now when the growth rate increases to some extent, inflation rate grows at a faster rate, inflation grows at a faster rate, that is suppose it is 3 to 5%, it will be called as crawling inflation. अब क्या होता है, एक बच्चा मान लो पहले जब छोटा होता है तो कैसे चलता है, रेंगते हुए चलता है. फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मतलब हाथ पैर ऐसे करके चलेगा. पहले क्या है,
बहुत धीरे धीरे मतलब कि थोड़ा सा पलट जाएगा या कुछ करेगा, 1 साल के अंदर का बच्चा या 6 महीने के अंदर का बच्चा, फिर जब 1-1.5 साल का हो जाएगा फिर क्या करेगा वो, चार पैर में ऐसे करके हाथ के बल पे और पैरों के बल पे चलेगा, उसको कहते हैं क्रोलिंग, मतलब थोड़ा सा तेजी से चल रहा है। फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा 1.5-2 साल का, क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। मतलब क्रिपिंग से क्रोलिंग थोड़ा जल्दी चल रहा था, अब थोड़ा और जल्दी चलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोलिंग इन्फ्लेशन 5-10%। अगर इन्फ्लेशन रेट 5-10% है, दैट इज कॉल्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, so the child will start running, and walking inflation is a warning। walking inflation अगर है तो वार्निंग है कि इसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं किए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, so it should be controlled, else what will happen, walking inflation is there in the market suppose, then बच्चा क्या होगा, दौड़ने लगेगा, so that is called as running inflation, means 10% प्लस। इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में है, कंट्रोल के बाहर है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर बच्चा और बड़ा हो जाए, क्या हो जाएगा, वो बोलेगा ओके ओके ओके, अच्छा टच है ना, क्या करते हैं, ऊपर करना है, नेक्स्ट पेज, नहीं नहीं ठीक है। ओके, सो वी हैव सीन creeping inflation means 2-3%, then crawling means 3-5%, walking means 5-10%, running inflation means 10% प्लस, मतलब डबल डिजिट में है। 100 रुपए का सामान 101-2 नहीं, डायरेक्ट 110, फिर 110 से 122, ऐसे बढ़ेगा प्राइस, रनिंग। अब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या सोचेगा, मुझे दौड़ना नहीं, अभी मुझे क्रिश बनना है, क्रिश की तरह जंप कर करके, या घोड़ा जैसे चलता है, एक स्टेप यहाँ पे फिर जंप करके आगे जाता है, फिर जंप करके आगे जाता है, सो बच्चा भी बोलेगा मुझे क्रिश बनना है, क्रिश की तरह जंप करके बहुत दूर जाके एक स्टेप रखना है, फिर और एक स्टेप रखना है और दूर जाके, सो उसको कहते हैं गैलोपिंग। सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट इज 100% प्लस, मीन्स 100 का सामान कितने में बिक रहा है, 200, 200 से बाद में हो जाएगा 400, दिस इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देन नेक्स्ट वन इज हाइपर इन्फ्लेशन, जब बच्चा बोलता है नहीं मुझे जमीन पे पैर रखना भी नहीं है, पैराशूट लाके दो मुझे उड़ना है, या पैराग्लाइडिंग का वो विंग्स लाके दो मुझे उड़ना है, ऊपर जाना है, ठीक है, सो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या हाई इन्फ्लेशन, ओवर इन्फ्लेशन। सो दैट इज 1000% प्लस, मीन्स 100 का एक सामान कितने में, डायरेक्टली 1000 रुपीज, डायरेक्टली 1000 रुपीज। सो नहीं 100% 1000% ग्रोथ है, ठीक है, 1100 हो जाएगा। सो इट विल बी 1100। अगर ऐसा है तब क्या होता है, बस ये मोह माया बंधन सब कुछ छोड़ के ऊपर उठ चुका है, अभी कैसे कंट्रोल, उसको कंट्रोल कैसे करे, हैज दिस हैपेंड, यस ये हुआ है, दिस हैज हैपेंड इन वेनेजुएला, इन जिम्बाब्वे, many other countries, in Germany also, recently in Venezuela 2016 I hope,
ऐसा सिचुएशन आया है, वॉशरूम के सामने लिखा है टिश्यू पेपर ओनली और टॉयलेट पेपर ओनली, नो न्यूज़पेपर, नो क्लॉथ, नो जिम्बाब्वे डॉलर। मीन्स जिम्बाब्वे डॉलर का प्राइस इतना कम हो गया था कि उससे लोग टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर की जगह यूज कर रहे थे। वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल नहीं था, लेकिन लोगों के पास इतने पैसे थे पर फिर भी वे लोग टॉयलेट पेपर खरीद नहीं पा रहे थे, इसीलिए करेंसी को यूज कर रहे थे टॉयलेट पेपर की जगह। इस कंडीशन में क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी एकदम जीरो, कुछ नहीं। ऐसा फोटो आया है कि लोग ठेले में भर के लेके जा रहे हैं पैसा, किस लिए? टू परचेज ए पैकेट ऑफ राइस। ग्रोसरी खरीदने के लिए ठेले में भर के लेके जा रहे हैं। एक आदमी ने ऐसे कार्डबोर्ड पकड़ के फोटो बैठा, एक आदमी, क्या लिखा हुआ था? आई एम ए बिलियनियर बट आई डोंट हैव फूड। बिलियनियर, बिलियंस ऑफ रुपीज है उसके पास, मतलब अरबों रुपए है, पर खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि खाने का दाम और ज्यादा है, पैसे इतने आ गए मार्केट में। किसी महापुरुष ने कहा था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे सबको। अब सोच सकते हो आप, अगर सबको 15 लाख मिल गए तब क्या होगा? यही सिचुएशन होगा। आपके पास 15 लाख नहीं, 15 करोड़ रुपए रहेंगे, लेकिन सामान और ज्यादा महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन मैनी फोल्ड हो जाएगा। इसीलिए समझदार आदमी है, इसीलिए नहीं दिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Now comes the question, is inflation good or bad? Inflation is good, but it should be in limit. Excess of everything is bad. So inflation is good up to a certain limit. Why? Because inflation is coupled with growth. अगर inflation है तो थोड़ा growth होगा। अगर inflation बिल्कुल नहीं है, that is called as zero inflation. zero inflation में क्या है? जो प्राइस पहले था वही है, ना सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, ना बिजनेस कोई ग्रो कर रहा है, जैसा था वैसा ही है। सो देयर विल बी नो ग्रोथ, इकोनॉमी विल बी स्टैग्नेंट। सो जीरो इन्फ्लेशन शुड नॉट बी देयर, इन्फ्लेशन शुड बी देयर एट ए लिमिटेड रेंज। सो इन्फ्लेशन इज कपल्ड विद ग्रोथ, लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड, बट दैट शुड बी इन द मैनेजेबल रेंज। अब रेंज कितना हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि 2 to 3%, आरबीआई बोलता है कि नहीं 3 to 5% अगर है तब भी मैनेज कर सकते हैं। सो बाद में एक डिसीजन लिया गया कि द टेंटेटिव मैनेजेबल रेंज इज 4 ± 2%। 4% ± 2% मीन्स 4 - 2 is 2% to 6%. 4 + 2 is 6. 2 to 6%. If the inflation is in this range 2 to 6%, then it is manageable. But currently, recently it has been in news that yes, it is nearly 6.7 or 7.5%. Means it is walking inflation in our country and beyond the manageable range. It should be brought into the manageable range. Else what will happen? It will keep growing and gradually it will become running inflation. It will cross the 10% limit and it will go into the double digit. So it should be brought into this range, manageable range. I hope it is clear. Okay, phases of inflation. This is an interesting topic, interesting point. So there are 4 phases of inflation: inflation, disinflation, deflation and reflation. What are these things? I'll explain these things with a graph. Okay, suppose 95 rupees is the average cost of production of the goods and services present in the market. 95 rupees, average cost of production is 95 rupees and products are sold at 100 rupees. Sorry, products are sold at 100 rupees. Now
suppose that due to inflation the product price has grown up to 110 rupees. So this is called as inflation. Inflation, I am writing in short. Now nothing to worry about here. 95 rupees was the cost of production. It was sold at 100 rupees in the previous year, suppose to 2022, and in 23 it has become, the price has become 110. Now the government has started thinking that yes, it is too much, 10% growth rate is too much, we should control it, we should bring it into the manageable range. So government takes some steps, government and RBI both takes some steps, and it is brought at a manageable range. Suppose 105. This is in the manageable range. Now what is this? Is inflation gone? No, inflation is still there, but the rate has been reduced. This reduction of rate or slowing of the rate is called as disinflation. मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही है पर स्पीड कम किया है. Disinflation does not mean absence of inflation. Disinflation means inflation is there but the rate has been reduced. गाड़ी आगे जा रही थी पहले 100 किलोमीटर के स्पीड से, उसको स्पीड कम करके 50 पे या 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे लाया गया. मीन्स द स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड बट द कार इज स्टिल मूविंग. सेम थिंग इन्फ्लेशन है मार्केट में. डिसइन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का नहीं होना नहीं है. डिसइन्फ्लेशन मतलब पहले 10% इन्फ्लेशन था, उसके रेट को कम करके मैनेजेबल रेंज में लाया गया. दिस प्रोसेस लोअरिंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन. सपोज अभी गवर्नमेंट और स्टेप ले रही है या आरबीआई और स्टेप ले रहा है. लेते लेते क्या हुआ, एक समय आया जब प्राइस कम होते गए कंटिन्यूअसली प्राइस कम होते होते एक टाइम आया जब प्राइस यहां पे आ गया 90 रुपीज. द प्राइस हैज कम डाउन बिलो द cost of production. We will be happy, yes, price is reducing, no problem, it's better, it's good for us, we can get anything at a lesser price. हम लोग को कोई भी सामान कम प्राइस में मिल जाएगा. But think about the manufacturers or producers, farmers जिनको cost of production पड़ रहा था 95, उनको 90 रुपीज मिल रहे, या जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी है, उनका मान लो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे नीचे अगर आ जाए, व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. वी शुड नॉट थिंक अबाउट ऑन द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव ओनली, बिकॉज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन हाई इन्फ्लेशन इज देयर, यस द प्रोड्यूसर्स वर गेटिंग मोर प्रॉफिट, इट वाज गुड फॉर देम, बट एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग अबाउट द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव दैट कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, उनको दिक्कत होगी. अभी प्राइस इतना कम अगर हो जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, दे आर फेसिंग ट्रबल. सो द प्राइस, व्हेन द प्राइस गोज बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और व्हेन कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन मीन्स continuous rise in price. So this situation is called as deflation. Deflation, when the price continuously falls. Inflation means continuous rise in price, deflation means continuous fall in price, opposite. Inflation and deflation both are opposite to each other. Inflation means continuous rise of prices and deflation means continuous fall of prices. अगर 95 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट है, उससे नीचे अगर आ जाए, then economy will shrink. Sorry, economy will shrink. लोगों को जब काम करके प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट से जो इनकम है वो कम है, they will stop producing. धीरे धीरे कारोबार बंद होते जाएंगे. So this situation is called as deflation. Now what will happen? Government again will think that yes, if the
price falls below the cost of production, we should take some steps so that it is revived, economy is revived. हम लोग ऐसे कुछ स्टेप लेते हैं ताकि प्राइस को फिर से जगह पे लेके आते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को भी दिक्कत ना हो और प्रोड्यूसर्स को भी दिक्कत ना हो, फिर इसको बढ़ाएंगे. बढ़ा के सपोज यहाँ पे लेके आए अगेन 105 पे. सो ये जो बढ़ाना है, when the price falls below the cost of production and when steps are taken by the government or RBI to revive the economy, that is called as reflation. Reflation means, inflation means continuous rise in prices. When the price rises too much, at that time government or RBI will take some steps and bring it to the manageable range. That lowering of the inflation rate means गाड़ी आगे बढ़ रही है पर थोड़ा स्पीड कम किया गया है, that is called as disinflation. Disinflation does not mean absence of inflation. Disinflation means just lowering down the rate of inflation. When the suppose government ने steps लिए, ठीक है जगह पे आ गया, इसके बाद और steps लेते गए, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि धीरे धीरे प्राइस फॉल होते होते एकदम नीचे आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. Continuous fall of prices is called as deflation, and deflation is the opposite of inflation. When the price falls below the manufacturing cost or cost of production, at that time the producers will face trouble, so government or RBI will take steps again to revive the economy. That process is called as reflation. I hope it is clear. Okay. Now let us see, is there any impact of inflation on the economy or on the employment? Sorry. Okay. So inflation है मतलब क्या है? सीधी सी बात है, आपके पास पैसे है तो ही आप लोगों को काम में रखोगे. अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अगर अनएम्प्लॉयड, आपकी अगर नौकरी चली जाती है, तो आपके घर में अगर मेड है या कोई ड्राइवर है या कोई है, उनको आप निकाल दोगे. सेम थिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, मार्केट में पैसा है, मार्केट में अगर पैसा है तो ज़्यादा लोगों को काम देंगे. मार्केट में पैसा है तो पैसे से काम चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग सब कुछ हो रहा है, तो उसको संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है. मार्केट में पैसे हैं तो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. मीन्स इफ इन्फ्लेशन इज देयर, व्हाट विल हैपन? मोर मनी इन द मार्केट. इफ मोर मनी इज देयर, growth will be there, means more employment will be there, and if employment increases, unemployment reduces. So unemployment will reduce. But in case of deflation, what will happen? In case of deflation, unemployment will increase. In case of inflation, employment will increase, means unemployment will reduce. But in case of deflation, employment will be reduced. आपके पास पैसे नहीं है, आपका काम नहीं है, तो क्या होगा, आप किसी और को काम पे नहीं रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. सो ये जो रिलेशन है कि इन्फ्लेशन होने पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय Mr. Phillips. So this is called as Phillips curve. So he says that there is an inverse relationship between inflation and unemployment. If we put inflation on this side and unemployment on this side, so the curve will be like this, Phillips curve. Phillips curve relates inflation with unemployment. If inflation is high, unemployment will be low. Inflation is growing in this side, so this unemployment is coming down. Inflation is
inflation is less in this side, so unemployment rate is high. I hope it is clear. Unemployment rate. Now this doesn't mean that yes, at there are two exceptions. One is hyperinflation. Hyperinflation on this side and zero inflation on this side. This doesn't mean that yes, at at hyperinflation 100% people will be employed, and at 0% zero inflation all the people will be unemployed. This doesn't mean. So there are exceptions. Yes, कि employment inflation बढ़े तो employment बढ़ता है, unemployment कम होता है. This doesn't mean कि hyperinflation अगर आ गया, hyperinflation में कि सबको काम मिल जाएगा, 100% of the population will be employed, और zero inflation में किसी को काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता. So there are exceptions, but the relation between unemployment and inflation has been explained by Mr. Phillips. So this is called as Phillips curve. This curve is called as Phillips curve. I hope it is clear. One thing I forgot to tell, ये हाइपर इन्फ्लेशन अगर हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन अगर हो जाए, in this case what will the government do? Government will disown the currency. लोगों के पास इतने पैसे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि ये पैसे हमारे नहीं है, ये इनको डिसोन मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर देगा. दिस इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी, demonetization. Demonetization is different thing. There are many terms: devaluation, depreciation, demonetization, disowning. So disowning मतलब गवर्नमेंट बोल देगी साफ कि demonetization में क्या हुआ था, हमारे 500 और 1000 के नोट को बैन किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि आप लाके बैंक में दो, आपको नए नोट मिलेंगे. मतलब नोट्स इन एक्सचेंज ऑफ नोट्स, कुछ नोट को बैन करके एक्सचेंज किया गया. गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये आपके पास रखो, हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है ना. गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे पास लाके दो, हम एक्सचेंज करके नए नोट देंगे. दैट इज डिमोनेटाइजेशन. बट डिजोनिंग मतलब क्या, गवर्नमेंट बोल देगी कि आपके पास जो पैसे हैं वो हमारे नहीं है आज से सॉरी, वो हमारे नहीं है, ये रद्दी के भाव है, हम लोग इनको डिजोन करते हैं, हम लोगों का इनके ऊपर मालिकाना नहीं है, कोई हक नहीं है, आपके पास जो पैसे आप रखो. सो उस समय काम कैसे चलाया गया, जैसे वेनेजुएला में या जिम्बाब्वे में आया था, सॉरी. सो उस समय बार्टर सिस्टम से, बार्टर सिस्टम मीन्स क्या, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको गेहूं दे देता हूं. बार्टर सिस्टम से चलाया गया, या कभी फॉरेन करेंसी से काम चलाया गया. जब तक दूसरा करेंसी, नए करेंसी बनाए नहीं गए, तब तक फॉरेन करेंसी से काम चलाया गया, या बार्टर सिस्टम को अप्लाई किया गया. आई होप इट इज क्लियर. Phillips curve is clear now. Now, measures to check inflation and deflation. We have seen that inflation, little bit of inflation is good, but if this, suppose this is 100 rupees, okay, if this inflation rises too much, suppose 110 or 120, means 10 or 20% range, this is also bad. Means inflation should be in a manageable range, 2 to 6%. In this range only inflation should be there. It should not fall below 2% also. It should not fall, it should not rise below above this percentage also, 6%. Now if deflation is there, suppose 90 rupees, this is also bad, this is deflation, this is inflation. High inflation is also bad and deflation is also bad. So if these situations are there, both are there, extremes, at both the cases, government or RBI should take some steps.
Okay, steps should be taken to bring them in the manageable range. अब हमें कोई बीमारी होती है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. इकोनॉमी को कोई बीमारी हुई तब भी इकोनॉमी के डॉक्टर्स के पास जाएंगे. इकोनॉमी के 2 डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, 2 डॉक्टर्स है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए. इकोनॉमी की बीमारी क्या है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, रिसेशन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, कुछ और मान लीजिए टर्मोइल्स, अप्स एंड डाउन्स होता रहा. तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 डॉक्टर्स है. ठीक करने के लिए कौन कौन? नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 है आरबीआई. 2 डॉक्टर्स है इकोनॉमी के. सो व्हेन वी गो टू द डॉक्टर, when we go to the doctor, they will prescribe something or they will give some injection. So the prescriptions given by the government of India, that is policies made by the government of India, are called as fiscal policy. Fiscal policy. And the prescriptions given by the RBI, that is the policies made by the RBI, are called as monetary policy. I hope it is clear. So monetary policy is the policy made by RBI and fiscal policy is the policy made by the government of India. I hope it is clear. So let us discuss, as our topic was inflation and monetary policy, we will discuss about the monetary policies. Fiscal policy is a different chapter. So monetary policy committee. Now what happened? Earlier the decision to control inflation or deflation was taken by RBI alone, but recently a government has taken a decision that RBI single-handedly cannot take the decision, as there are 2 poles, as there are 2 controlling powers. So both the controlling powers should take the decisions. So monetary policy committee बनाया गया. Committee में क्या है? Total 6 persons are there. Out of these 6 persons, 3 are from RBI and 3 are from government of India. Means government of India will nominate someone. This doesn't mean that yes, government of India से कोई भी आ जाएगा, निर्मला सीतारमण आके बैठ जाएंगी, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके देगी 3 ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट है, जिनको इस फील्ड के बारे में जानकारी है, एनालाइज कर सकते हैं. हो सकता है मिनिस्टर के अंदर हो सकता है कोई डिपार्टमेंट से हो सकता है कहीं से भी हो सकता है रघुराम राजन या अमर्त्य सेन को भी भेज दे गवर्नमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि नहीं भेजेगी. बट 3 nominated by the government and 3 belonging to RBI. And who is the chairman? Chairman of these 6 will be RBI governor. RBI governor will be the ex officio chairman. Ex officio means by virtue of the position. बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि यही है. जैसे हमारे आवर वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. उनके पोस्ट के कारण, जो भी पहले कोई और थे, जैसे पहले वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो बन गए राज्यसभा के चेयरमैन. अभी है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी. सो जगदीप धनखड़ जी अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो वो जाके राज्यसभा की सीट पे बैठते, चेयरमैन है. एक्स ऑफिशियो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन. सो आरबीआई गवर्नर इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस मॉनेटरी कमिटी. I hope it is clear. Monetary policy committee, MPC. Then tools of monetary policy. Yes, monetary policy को कैसे यूज किया जाता है? How is the monetary policy used by the RBI? Yes, mostly RBI or monetary policy committee. So there are certain tools. Tools are of 2 types mainly: quantitative tools and qualitative tools.
क्वांटिटेटिव, इससे एक वर्ड दिमाग में आता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव से आता है क्वालिटी। मीन्स क्वांटिटी में क्या होता है, जो चीज़ों को हम नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट दीज आर काउंटेड इन क्वांटिटी। लाइक मुझे 5 पेन दे दो, ओके ये पेन है मेरे पास, 5 पेन दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ गुड आइडियाज दीजिए, हमें कुछ सजेशंस दीजिए, एडवाइस दीजिए, या कुछ मतलब कि ज्ञान, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? क्या टीचर को जाके बोलेंगे कि हमें 5 किलो ज्ञान दे दीजिए, या किसी संत के पास गए कि हमें थोड़ा सदुपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, एडवाइस दीजिए, तो बोलेंगे क्या कि आप मुझे 2 लीटर एडवाइस दे दीजिए? नहीं ना। सो वो है क्वालिटेटिव, क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, वहां पे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सो द थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर kept in the qualitative tools, and which can be measured are kept in the quantitative tools. I hope it is clear. Let us go to the next slide. It will be more clear. Yes, let us see the differences between the different types of tools. Quantitative tools, bank rates. Rates can be measured, yes, 2%, 3%, 5%, 6%, bank rates. Bank rates means money only. Yes, if you are taking a loan, suppose the rate of interest is 5%. So bank is measuring, can be calculated, right? 5%. Suppose you are taking a loan of 1 lakh rupees and the interest rate is 5%. 5%. So 1 lakh of 5% is 5,000 rupees. It can be measured, it can be calculated. So bank rates, interest rates on loans or deposits or repo rates, reverse repo rates, whatever it is, they will be counted in bank rates. Then reserve ratios. Reserve ratio जैसा CRR, SLR, LCR, all these things are reserve ratios. कि आपको इतने % रखने हैं। सपोज बैंक को कहा आरबीआई ने कि यू हैव टू मेंटेन ए CRR ऑफ 8%। सपोज 8% है, 8%। सपोज बैंक के पास टोटल है 10 लाख रुपए और सपोज 1 करोड़ है, बैंक को कहा कि आप 8% मेंटेन करोगे। सो 8% मीन्स कितने हो जाएंगे? 1 करोड़ का 10% होता है 1 लाख, मीन्स 80,000। 80,000 आपको डिपॉजिट रखना है। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं रिजर्व रेशियो, CRR, SLR एटसेट्रा। OMO क्या है? OMO मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे आरबीआई क्या करता है कि बॉन्ड्स को सेल करता है या परचेज करता है। OMO में क्या होता है? बॉन्ड्स है, ठीक है, या तो सेल करेगा मार्केट में, नहीं तो मान लो मार्केट है, नहीं तो परचेज करेगा, बाई। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें भी मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। देन LIF मीन्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दिस विल इंक्लूड रेपो एंड रिवर्स रेपो। Repo and reverse repo, so these combinedly are called as LIF, liquidity adjustment facility. MSF means marginal standing facility। अगर बैंक के पास, किसी बैंक के पास इमरजेंसी कुछ आ गया, जैसे यस बैंक कुछ दिन पहले, या बहुत सारे बैंक, कभी अचानक हो सकता है कि बैंक के पास पैसे नहीं है लोन देने के लिए, या इमरजेंसी कुछ आ गया, अचानक इमरजेंसी कंडीशन में आरबीआई के पास गए, तो आरबीआई लोन देता है, इमरजेंसी लोन। सो दैट इज कॉल्ड एज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक आरबीआई बोलेगा कि 5% पे देंगे, 10% पे देंगे। देन ये क्वालिटेटिव टूल्स है, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं, दिस कैन जस्ट बी फेल्ट। जैसे मोरल सुएशन, मोरल सुएशन मतलब बैंक को मोरल लेसन देगा कि आपको अच्छा काम करना है, आपको ब्राइब नहीं लेना है, आपको समझदारी से काम करना है, यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी। आरबीआई बैंक को गाइडेंस देगा मोरालिटी के ऊपर।
क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग क्या है? आरबीआई चेक करेगा कस्टमर के क्रेडिट रिपोर्ट्स को कि कस्टमर का रिपोर्ट कैसा है, वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर किसी का रिपोर्ट अच्छा नहीं है उसको मत दो लोन, ऐसे बोलेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सपोज आप गए एक लोन लेने के लिए 1 लाख रुपीज, दे विल नॉट गिव यू 1 लाख रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपीज लोन लेने गए तो आपको 90,000 ही मिलेंगे। ये जो 10,000 है आपको इंटरेस्ट देना है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको देना है, लेकिन आपके अकाउंट में आएंगे 90,000 रुपीज। ये जो 10,000 रख दिया, 10,000 जो बैंक ने रख दिया है, that amount is called as margin. So RBI will decide that, RBI will say that yes, now inflation is there, so you keep more margin. Don't give 90,000 also. If inflation is there, give 80,000 to the person. So increase the margin. RBI is not dealing with any quantity. RBI is just suggesting the banks. Then credit regulation, same things again. Credit, RBI is checking the credits. Okay. Credit that yes, you should give the amount to this sector, suppose priority sector lending, एजुकेशनल सेक्टर को दे दो, फार्मर्स को दे दो, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर, सपोज टेलीकॉम सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, टेलीकॉम सेक्टर को मत दो। ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है उसको दे दो। सो उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई, बोलेगा, गाइडेंस देगा। देन पब्लिकेशन, आरबीआई कुछ पब्लिसाइज करेगा, कुछ पोस्ट करेगा, ये करेगा मीडिया में या न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, based upon various values and all these things. Moral suasion means RBI will give moral lesson, moral advices to the banks. And direct action means RBI will take action upon the government, upon the banks, that yes, आप सही काम नहीं कर रहे हो, आपको इतना कुछ कहा हमने, आप फिर भी नहीं मान रहे हो, तो आपके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन, अब यहाँ पे एक्शन तो ये मेजर नहीं कर सकते, नो वन कैन मेजर द एक्शन। बैंक को सस्पेंड कर दिया, कुछ कर दिया, या बैंक को मर्ज नहीं, मतलब बैंक के ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले लिया। बैंक को कहा कि आपको इमरजेंसी में भी लोन नहीं देंगे या आपको हायर इंटरेस्ट पे देंगे, एबीसी व्हाटएवर, कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्शन ले लेगा अगर बैंक सही से काम नहीं कर रहे तो। दीज आर काउंटेड इन द क्वालिटेटिव टूल्स, not the quantitative. I hope it is clear. Quantitative means which can be measured or calculated, and qualitative means which cannot be measured or calculated. अब क्या है, आरबीआई के पास बहुत सारे काम हैं, जैसे बैंकर्स ऑफ बैंक, देन लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये वो हम लोग बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे। बट मेन टास्क ऑफ आरबीआई क्या है? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। ये दो मेन काम है। अभी क्या है, दोनों अपोजिट है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर है, इन्फ्लेशन इज, इफ इन्फ्लेशन इज देयर, ग्रोथ विल बी देयर। If inflation is less, we have seen that inflation is coupled with growth, so inflation I. If inflation is less, growth will be less. This is the scenario. Now, RBI has the task of controlling inflation and encouraging growth. Means it should control inflation, but growth should not come down. Again, it should encourage growth, that should not contribute or cause high inflation. Means you might have seen some people walking on road, walking on rope. रोप पे कभी कभी दिखते हैं कि एक कोई इंसान ऐसे रोप है, उस रोप पे चल के चले जाता है, right? Nearby also in Rajendra Nagar area also, I have seen the same thing, that yes,
some kids are there who walk on the ropes. रोप पे वॉक करके चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक स्टिक होता है, एक स्टिक होता है. स्टिक किस लिए होता है? द स्टिक इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग. दे विल बैलेंस लाइक दिस. If stick is inclined towards one side, then the kid may fall down. So उनको क्या करना होता है? उसको बैलेंस करना होता है. ओके, इसके जैसे बैलेंस करना होता है. अगर एक साइड में वजन ज्यादा हो गया तो ऑपोजिट साइड ज्यादा उठ जाएगा. इस साइड में अगर ज्यादा हो गया तो वजन ज्यादा हो गया, इस साइड उठ जाएगा. ऐसा है. सेम सिनेरियो, जो रोप पे चल रहे हैं उनके पास एक स्टिक होता है. स्टिक इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग. वो अगर एक साइड ऐसे हो जाता है तो गिर जाएंगे. जो भी परफॉर्मर्स है, जो भी बच्चे हैं या कोई भी है, वो खेल दिखाते हैं, वो गिर जाएगा अगर स्टिक ऐसे हुआ तो. अगर इस साइड हुआ तो भी गिर जाएगा. सेम सिचुएशन इज विद देयर आरबीआई. आरबीआई के साथ भी सेम सिचुएशन है. क्या है सिचुएशन? RBI is also having the same situation. On one hand, RBI has to support, control inflation. Means suppose inflation is on this side and growth is on this side. So on one hand, RBI has to control inflation. On the other hand, RBI has to support growth. Now both are opposite. अगर RBI ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ज्यादा स्टेप्स ले लिए, ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, सो क्या होगा? इन्फ्लेशन तो लो होगा, इन्फ्लेशन विल कम डाउन, बट ग्रोथ विल ऑल्सो कम डाउन. इफ RBI focuses on growth, okay, that let us have more growth this year, then this will cause high inflation again. सो आरबीआई के पास ये है कि बैलेंस करना होता है. ग्रोथ को अगर ज्यादा वैल्यू दे दिए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा. अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ज्यादा फोकस कर दिए तो ग्रोथ भी कम हो जाएगा. सो आरबीआई को बैलेंस करना होता है एक मैनेजेबल रेंज में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइट रोप वॉकिंग. दिस स्टेप सिमिलर टू दिस स्टेप, टाइट रोप वॉकिंग. टाइट रोप पे ये वॉक कैसे कर रहा है? बैलेंसिंग. सो आरबीआई को भी बैलेंस करना होता है. किन दोनों में? इन्फ्लेशन में और ग्रोथ में. इन्फ्लेशन हाई ना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एंड ग्रोथ शुड बी देयर. सो इफ वी फोकस ऑन ओनली कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, देन ग्रोथ विल ऑल्सो बी लो. इफ वी फोकस ऑन ओनली ग्रोथ, then there will be high inflation. So there is a risk. So this process is called as tightrope walking. I hope it is clear. Okay, so let us see the various steps taken by the RBI to control inflation or deflation. Opposite of inflation is deflation. Inflation means high price and deflation means very low price. So inflation, in case of inflation, what will the RBI do? RBI will take tight money policy. Tight money policy means it will try to hold money, it will not try to leave the money. Okay, पैसे को छोड़ने का नहीं स्टेप नहीं लेगा. आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उस समय सोचेगा कि पैसे को कैसे होल्ड करके रखे, मार्केट से कैसे एब्जॉर्ब करे. मार्केट से पैसों को एब्जॉर्ब करने का सोचेगा आरबीआई, ना कि मार्केट में पैसा छोड़ने का. But in case of deflation, easy money policy, this should be easy money, not ease. Easy money policy. Easy money policy means वो अपने पॉलिसी को ऐसे बनाएगा कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाए, लोगों के पास पैसे आए, लोग खरीदे, ताकि मार्केट फिर से चलने लगे. मार्केट इज रिवाइव्ड अगेन. सो इजी मनी पॉलिसी लेगा. सी, in case of inflation, RBI will take steps to absorb money from the market. Sorry. Then in case of deflation, RBI will take steps to release money in the market. मार्केट में पैसे जाए, आरबीआई क्या सोचेगा इन्फ्लेशन के समय कि मार्केट में पैसा ना जाए जो एक्स्ट्रा, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स.
मनी सर्कुलेशन हैज बीन इंक्रीज, सो मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या सोचेगा कि जो मनी मार्केट में उसको एब्जॉर्ब कर लूं और जो मेरे पास है उसको भी ना छोड़ूं, मेरे पास यानी बैंक्स के पास। उल्टा करते हैं डिफ्लेशन के केस में कि मार्केट में पैसा नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे, मार्केट चल नहीं रहा, उस समय सोचेगा कि थोड़ा इजी कर देते हैं ताकि लोग आराम से, लोगों के पास पैसा जाए, लोग आराम से खरीदारी करें, मार्केट फिर से चलने लगे, इकोनॉमी चले। इसमें क्या करते हैं, बैंक रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। बैंक रेट इंक्रीज अगर कर दिया तब क्या होगा, मार्केट में लेस मनी। अब मान लो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई से बैंक्स जो लोन लेते हैं, आरबीआई से बैंक्स लोन लेते हैं, बैंक्स को जरूरत है 1 लाख करोड़ की, तो जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई लोन देगा लेकिन उसके बदले में इंटरेस्ट लेगा। अब अगर आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट जो लेते हैं, इधर मान लो लोन, इधर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट। पहले मान लीजिए 5% पे दे रहे थे, अभी 6% पे देंगे। क्यों? उससे क्या होगा, बैंक्स को लोन कॉस्टली पड़ेगा। बैंक्स पहले मान लो 5% पे ले रहे थे, बैंक्स पहले 5% पे ले रहे थे और 7% पे दे रहे थे। अभी बैंक से कस्टमर्स लेंगे तो कस्टमर्स लोन लेंगे पहले, अभी बैंक, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया सपोज, सो बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। पहले 7%, अब क्या है 5% से 6% हो गया है, तो बैंक्स को भी बढ़ा के 8% करना पड़ेगा। इफ द इंटरेस्ट रेट इज हायर देन लेस मनी विल बी फ्लोन इनटू द मार्केट, मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग लोन ले रहे हैं वो लोग, एक नंबर तो कुछ लोग लेंगे ही नहीं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है नहीं लेंगे, और कुछ लोग लेंगे तो भी कम आएगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है अगर, इफ द इंटरेस्ट रेट इज हाई देन मनी सर्कुलेशन विल बी लेस। रिसेंटली आरबीआई हैज, recently it has been in news that RBI has, what has RBI done? RBI has increased the repo rate by 35 BPS. 35 BPS means basis points. So it was, basis points means 100 basis points equal to 1%. So earlier it was 5.9%, now 35 BPS means 0.35% has been increased, so it has become 6.25%. Okay, so क्यों बढ़ाया गया रेपो रेट को, क्यों बढ़ाया गया? बिकॉज इन्फ्लेशन इज देयर इन द मार्केट। सेम डिपॉजिट रेट को भी बढ़ा देंगे। डिपॉजिट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास अगर पैसे ज्यादा है वो जाके ज्यादा डिपॉजिट रखेंगे। सपोज पहले डिपॉजिट पे 5% मिलता था, अभी 8% कर दिया, सो मोर पीपल विल गो टू द बैंक टू डिपॉजिट द मनी। मार्केट में ज्यादा पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे लोग, मीन्स क्या होगा, लोगों के पास जो पैसा है वो बैंक में चले जाएंगे धीरे धीरे। सो जो भी बैंक रेट्स है, वेदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन बैंक रेट, बेस रेट, डिपॉजिट रेट, XYZ, जो भी रेट है, all the rates will be increased during inflation, and in case of deflation they will be decreased, so that people get more money to purchase the things and so that economy runs well. इकोनॉमी को अच्छा चलने के लिए या लोगों के पास पैसा जाए, इसीलिए आरबीआई इजी मनी पॉलिसी फॉलो करेगा। उस समय बैंक रेट्स को डिक्रीज कर देगा। पहले रेपो रेट सपोज 6% था, उसको कम करके 4% कर देगा कि मुझे 4% दे दो पर मार्केट में छोड़ो पैसे। अब बैंक्स जो 6% पे लेके सपोज 8% पे दे रहे थे, अब बैंक्स 4% में ले रहे, 5% या 6% में दे देंगे। 5% में भी अगर दे दिए तब भी लोग सोचेंगे कि हाँ इंटरेस्ट रेट पहले 8% था, अभी 5% पे आ गया है, ले लेते हैं लोन, लोन लेके कुछ कर लेते हैं, हाँ लोन लेके कार ले लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे मनी सर्कुलेशन ग्रो होगा एंड इकोनॉमी विल रिवाइव अगेन। आई होप इट इज क्लियर। देन रिजर्व रेशियोज विल बी इंक्रीज्ड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ डिफ्लेशन इट इज लोअर्ड, reduced. Bonds G-Secs are sold. Now
बॉन्ड्स क्या होगा, बॉन्ड्स क्या करते हैं, इधर मान लो आरबीआई है और इधर मार्केट है। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई सोचेगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, पैसा खींचो। सो क्या करेगा, आरबीआई मार्केट से पैसा ले लेगा। पैसा लेगा मतलब बदले में क्या देगा, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कागज है, वो लेके कुछ करेगा नहीं कोई, मनी सर्कुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो आरबीआई विल सेल द बॉन्ड्स। बॉन्ड एक दुकानदार क्या करता है, कुछ सेल करता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। सेम आरबीआई sells the bonds to the market and in return takes money from the market। इधर उल्टा करेगा। in case of deflation क्या होगा, आरबीआई और इधर मार्केट। so RBI will try to, in case of deflation, RBI will try to release money into the market। so RBI market में पैसा छोड़ेगा। in return RBI will purchase the bonds, means RBI will purchase, GSEC means government security, in short it is GSEC। so in case of deflation RBI will purchase the bonds and release money into the market। in case of inflation RBI will sell the bonds and absorb money। I hope it is clear। so now let us see some questions which have come into the UPSC prelims, because our course is prelims perspective। so let us see whatever we have studied, based upon this some questions, means whatever questions have come in UPSC prelims in last few years, let us see how our knowledge has been molded। means our UPSC will ask questions based upon our knowledge, but not direct questions often। sometimes RBI will mold the knowledge, mold the concepts and try to grab the answer from the students। so this is a direct question। yes, in India which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? which one of the following is responsible for maintaining price stability? we have seen that RBI and Government of India both। now here options are Department of Consumer Affairs, this is a direct question and easy one। this has come in UPSC prelims 2022। then Department of Consumer Affairs, Expenditure Management Commission, Financial Stability and Development Council, no, the correct answer will be RBI, Reserve Bank of India। so nothing to understand here, we have already explained these things। this is a direct question, so no need to worry। so the answer will be D, Reserve Bank of India। see, answer is D। next one is tight, consider the following statements। this has come into the prelims 2022। so tight money policy, I have just mentioned tight money policy in case of RBI। yes, RBI follows tight money policy in case of inflation। so tight money policy of US Federal Reserve could lead to capital flight, is this statement correct or not? so tight money policy, now inflation is there in USA also, that's why their federal bank, that is their central bank, Apex bank is also following the tight money policy। their Apex bank is, what is their Apex bank, that is Federal Bank, Federal Reserve of USA doing? so US Federal Bank is following tight money policy। tight money policy means, tight monetary policy means it is trying to absorb money, so it has increased the rates। suppose we are having repo rates, in their case it is some other rates, so bank rates has been increased, bank rates have been increased। when bank rates have been increased, I have just said that, yes, I have said that in case of inflation bank rates are increased, not only in India, across the globe this happens। so
the Federal Bank of USA, the Federal Bank of USA has increased the rates. Now what will happen? Loans are costlier in their country because whatever suppose 5% rate was there earlier, it has been raised to suppose 8%. So loans have become costlier. Deposit rate has been increased. When deposit rates are increased, people will come and deposit into the banks. So the US Federal Bank is following the same. US Federal Bank यही कर रहा है, उनके कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके जो बैंक रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा. सो जब बढ़ा दिया, लोगों को लोन कम मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग क्या है कि लोग जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, लोग जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कि बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. पहले 5% मिल रहा था, अभी 8% मिल रहा है, या पहले मान लीजिए 4% मिल रहा था, अभी 6% 7% मिल रहा है. सो यही हो रहा है. अभी इंडिया में क्यों इन्फ्लेशन ज़्यादा है, क्यों मनी का करेंसी का वैल्यू कम है, डिप्रिशिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था ये बात कि रुपी इज नॉट डेप्रिशिएटिंग बट डॉलर इज अप्रिशिएटिंग. मीन्स डॉलर कॉस्टली हो रहा है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से डॉलर्स को खींच रहे हैं. जो लोग अमेरिका के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, दे आर पुलिंग देयर मनी बैक बिकॉज दे आर गेटिंग हायर इंटरेस्ट in their country, or investors from different countries across the globe, they are pulling the money and investing in or depositing in banks in America because they are getting high interest. So the same thing, when US dollars are in demand, means when people are absorbing dollars from all the countries, means dollars will be less in the market. So there is high demand for dollars, that's why the price is increasing. If we compare our rupee with some other currency, let us suppose euro or pound sterling, then we'll see that rupee has not depreciated. In fact, rupee has appreciated to some extent, but with respect to dollar it is calculated, so it is depreciating because dollars are becoming costlier, dollars are becoming less available in the market. Their Federal Reserve Bank is increasing the rates and people are taking dollars from across the globe, across the world, and depositing in banks. So the question is this one. Okay. So tight money policy of US Federal Reserve lead to capital flight. Capital flight means the same situation which I have explained just now, that people are taking money, dollars from across the globe, from different countries, and depositing in USA. So कैपिटल फ्लाइट का मतलब यही है कि पैसे को निकाल के कहीं और लेके जाना. सो क्या है, टाइट मनी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व. यस, यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइट मनी पॉलिसी फॉलो किया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. दिस इज ट्रू. व्हेन दिस इज ट्रू, डायरेक्टली यूज द एलिमिनेशन मेथड. सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स where this first statement is not there, this will be false. This cannot be the correct answer. After reading one statement only, we are using elimination method here. So after reading the first statement, we have come to know that yes, this is true. So when this is true, the second option is wrong, means the answer will be either A, C or D. B cannot be the correct answer. Now when B cannot be the correct answer, let us see. Sorry. Now capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commerce borrowings. We don't know about this. Suppose we don't know about this. This is also true, but suppose we don't know anything about this. Then what will happen? Go to the next statement. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Devaluation of domestic currency
decreases the currency risk associated with ECB. ECB means external commercial borrowings. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होता है? जब मान लीजिए इंडिया के लोग दूसरे कंट्री के लोगों से डायरेक्टली बोरो कर रहे हैं. सपोज अभी किसी को बिजनेसमैन को जरूरत है पैसों की, तो इंडिया के किसी बैंक से नहीं, फॉरेन के किसी इन्वेस्टर से डायरेक्टली ले लिया, लोन ले लिया. सपोज अंबानी को जरूरत पड़ी, सो इलन मस्क से ले लिए. इलन भाई थोड़ा दे दो, 10 लाख करोड़ दे दो. सो उसको कहेंगे ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. सो क्या है, डिवैल्यूएशन अगर करे तो ये इंक्रीज हो जाता है. डिवैल्यूएशन मतलब क्या है? पैसों का वैल्यू कम हो जाना. अगर मान लीजिए रुपीस का वैल्यू कम हो जाता है, दिस मीन्स दैट ECB जो बाहर से लोगों ने लिए हैं उसके ऊपर रिस्क जो है, रिस्क बढ़ जाएगा. उसको सोचना पड़ेगा कि ये बंदा दे पाएगा कि नहीं. मान लो आरबीआई नहीं, अंबानी ने इलन मस्क से लिया है 1 लाख करोड़ रुपए विथ इंटरेस्ट जो भी बनेगा. अब इंडियन रुपीस का वैल्यू कम हो गया, सो उसका रिस्क तो बढ़ जाएगा ना कि ये बंदा दे पाएगा कि नहीं. हम उसके करेंसी का वैल्यू कम हो गया. सो रिस्क इंक्रीजेस व्हेन द करेंसी डेप्रिशिएट्स और डिवेल्युएट होता है, उस समय रिस्क बढ़ जाता है ना कि घटता है. मीन्स क्या होगा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वी हैव फाउंड, we have seen that this statement is true. We suppose that we don't know anything about this one. We don't know anything about the second one, but we have found that the third one is wrong. When the third one is wrong, 3 is there in this one, in this one. So all these 3 are cancelled. Statement 3 is there in B, C and D. So all are false. So the correct answer will be A, 1 and 2. Yes, this statement is also correct. So 1 and 2. Based upon our knowledge, we just need to understand the things. We just need to correlate the topics and mold the things. UPSC asks questions sometimes very rarely directly, else they will mold the things. You just need to catch their point. Okay, it is not, economics is not tough. Economics is just technical. Okay, so you have to correlate the things. Yes, यूएस के पॉलिसी इंक्रीज होने से क्या होगा, यूएस का फेडरल रिजर्व ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया, मतलब हमारे देश से पैसे जाएंगे, कैपिटल फ्लाइट होगा. यस, करेक्ट. डिवैल्यूएशन अगर हो गया तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा ECB के ऊपर, बट यहां पे लिखा है डिक्रीज हो जाएगा. सो this statement is false. When this statement is false, all these 3 options are wrong. Means we are left with only one option, that is A, 1 and 2 only. See, without knowing anything about this statement, second statement, we have come to the correct answer. So you don't need to know everything, but you need to know how to use the proper logic. You need to use the proper logic at proper places. Clear? Let us see the next question. Yes, the correct answer is A. Okay. Okay. So next question. This question was also asked in 2022. With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. Just now I have said that yes, in case of inflation, what will happen? Inflation means RBI will try to absorb money from the market, means RBI and market. So RBI will try to absorb money from the market, and in return RBI will give bonds. That is, RBI is selling the bonds. In case of inflation, RBI is selling the bonds. In case of deflation, yes. In case of deflation, it will be reversed. RBI will buy bonds
and release money into the market. But in the question it is asked, if the inflation is too high, RBI is likely to buy. This is false statement. RBI will sell the money. RBI will sell the government securities or bonds, and in return RBI will absorb money from the market. So first statement is wrong. When first statement is wrong means 1 1 1, A, C and D, these three options were having first statement. So when these three are cancelled, we are left with only one. The correct answer is B, 2 and 3 only. See, without reading the second and third statements, we have come to the correct answer. Still, let us see the statements. If the rupee is rapidly see, in case of this type of questions, combination of statements, always after reading one statement, we should go to the options. So if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Yes, correct. If rupee is depreciating, what will happen? Suppose rupee is depreciating, rupee's values are depreciating in the market, means what will happen? Dollar is becoming stronger, dollar is appreciating. So dollar is appreciating means RBI will try to reduce the gap. Suppose earlier it was 82, now it has become nearly 83 rupees per dollar, nearly, not exactly 82 point something. So when rupee is depreciating, what will RBI do? Why is rupee depreciating? Because dollar is appreciating, dollar is less available in the market. Now we have seen the demand and supply. So when the demand is more, the price will be increased. When the supply is more, price will be reduced. So this is the demand price curve, this is the supply curve price, supply price curve. So when price of dollar is more, rupee is depreciating means price of dollar is more, dollar is appreciating. So when dollar is appreciating, price of dollar is more, RBI will try to increase the supply of dollars. So RBI will, yes, sell dollars in the market. If dollars are sold, suppose RBI अगर डॉलर सेल कर देता है, तब क्या होगा? मार्केट में डॉलर बढ़ जाएंगे, मार्केट में डॉलर्स का जो सर्कुलेशन है या सप्लाई है वो बढ़ जाएगा. अगर बढ़ गया तो क्या होगा? प्राइस नीचे आ जाएगा. सो डॉलर नीचे आ जाएगा, प्राइस रुपये का वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगा. दिस इज करेक्ट. अगेन नेक्स्ट वन, if interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Yes, इंटरेस्ट रेट अगर अभी क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? डॉलर्स ले जाके बेच यूएसए में डिपॉजिट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर कम हो जाता है तब क्या होगा? लोग वहां पे डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो आरबीआई के पास ऑप्शन रहेगा कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद सकता है. आरबीआई इज लाइकली टू बाय डॉलर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3 only. When we have eliminated the first statement, at that point only we have reached to the correct option, that yes, A, C and D cannot be the correct answers, B is the correct answer. I hope it is clear. See, B is the correct answer. Next one. अब इसमें क्या है? With reference to Indian economy, demand pull inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया है. व्हेन द डिमांड इज मोर, प्राइस विल बी मोर. सो इन्फ्लेशन ड्यू टू हाई डिमांड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड, नॉट रिड्यूस्ड, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. सपोज हमको कुछ नहीं मालूम यहाँ पे. ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. अब आरबीआई क्या करेगा? इन्फ्लेशन है एक तरफ और एक तरफ डिफ्लेशन है. सपोज
इन्फ्लेशन के समय आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करता है सो दैट द इकोनॉमी इज कंट्रैक्टेड. सो इस समय कंट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो किया जाएगा. और डिफ्लेशन के समय एक्सपेंशनरी, ताकि इकोनॉमी एक्सपैंड करे. आरबीआई इजी मनी पॉलिसी फॉलो करेगा, पैसे को छोड़ेगा. सॉरी. सो ज्यादा से ज्यादा पैसों को मार्केट में छोड़ेगा कंट्रोल करने के लिए. मतलब इस समय अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो किया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा. सो द सेम थिंग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर फॉलो किया तो इन्फ्लेशन के समय और बढ़ जाएगा. यस, दिस इज करेक्ट. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, मतलब जहां पे वन नहीं है उसको कैंसिल कर दिया. फिर फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, वेजेस, मान लो कुछ भी मालूम नहीं, हायर परचेजिंग पावर कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है. ये वी हैव डिस्कस दिस थिंग जस्ट नाउ. राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. During inflation, RBI will raise the this one interest rate. RBI interest rate बढ़ा देगा. So interest rate अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा. अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, डिपॉजिट रेट और बैंक रेट और लोन रेट ऑफ लोन, anything, then inflation will come down, we have seen. But in case of deflation, interest rates are reduced and inflation will be higher. So question क्या पूछा, demand pull inflation can be increased. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे पूछा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जैसे अभी रिसेंटली आरबीआई हैज इंक्रीज द रेपो रेट, मींस इन्फ्लेशन इज टू बी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज टू बी पुल डाउन. बट हियर दे आर आस्किंग दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. दैट इज फॉल्स. सो व्हेन दिस स्टेटमेंट, फिफ्थ statement is false, wherever fifth statement is there, they will be false only. So the correct answer is A, 1, 2 and 4 only. 1, 2 and 4 only. A is the correct option. I hope it is clear. By eliminating, suppose we don't know any of this, we don't know any about any of this, हम लोग को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, फर्स्ट टू फोर्थ, बट we know that yes, if interest rates are higher, then demand pull inflation will be decreased, not increased. So this one is wrong. If we find out that yes, this one is wrong, then we can eliminate these three options B, C and D, and we will reach at the correct option, that is A. So this question was asked in 2021, last year. Let us see the next question. See answer A. Then next question. This question was also asked in 2021. Which of the following is likely to be the most inflationary in its effects? Means which of these will increase inflation to a great extent, large extent. So repayment of public debt, don't know whether it will do or not. Borrowing from the, suppose repayment of public debt, how will this cause inflation or not, we don't know. Then borrowing from the public to finance a budget deficit, in this case yes, money from the market will remain in the market only. Borrowing from the banks to finance budget deficit, okay, this will yes, this will result in inflation, but we don't know exactly. Let us read the last one. Creation of new money to finance a budget deficit. Yes, I have already mentioned this one, that yes, if inflation, if deficit is managed or deficit financing is done by creation of new currency, more money,
then that will result in huge inflation. बहुत ज़्यादा inflation हो जाएगा, and this is a direct question, so this is the correct answer. Yes, repayment of public debt. इससे भी inflation होगा, इससे भी inflation होगा, but इससे बहुत ज़्यादा होगा. So question पूछा है, most inflationary question पूछा है. So creation of new money to finance a budget deficit. If there is a budget deficit and if we are trying to mitigate or balance the deficit by publishing or printing more currency. Okay, so this is the correct answer, D. Let us see. So answer is D. So I hope this is enough for today, and there it has been a brief idea, and I hope it will be beneficial how we can use our knowledge to find solve the questions, how we can mold our knowledge, how we can correlate the things, as I have already mentioned these things using few of the previous year's questions. So I hope this will be beneficial, and here I conclude. Thank you so much, and keep following Ojanka IAS.